Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all would be fit and fine with the grace of Allah Almighty. Welcome back, all of you. Dear students, today we are going to start the new chapter, chapter number 9, Government of Pakistan. In this chapter, we will learn about the structure of the government, the types of the government, and the powers of the government and powers of the provinces of the governments. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जो हुकूमत का जो पावर है, ताकत है, उसके बारे में, और हुकूमत के जो सूबे हैं उनकी पावर्स क्या हैं, ताकतें क्या हैं, तो फेडरेशन क्या होती है, तो सब के लिए हम जो है इस चैप्टर के अंदर सब चीज़ें पढ़ेंगे. तो आज हम जो है पेज नंबर 91 से शुरू कर रहे हैं. फेडरेशन इज़ अ टाइप ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट. फेडरेशन जो है वो एक आज़ाद रियासत होती है जो मरकज़ी हुकूमत के साथ जो है कनेक्टेड होती है, मिली हुई होती है. एंड रिपब्लिक इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट. और रिपब्लिक जो होता है वो एक अवामी फलाही एक जमहूरी रियासत होती है, ठीक है, जिसके अंदर लोग जो हैं, आम लोगों को ताकत होता है, हक होता है कि वो अपने जो हुक्मरान जो हैं, हुक्मरान तबके जो हैं, हुक्मरान जो हैं, उनको वो इलेक्ट करें. मीन्स दी कॉमन पीपल विल हैव पावर टू इलेक्ट देयर ओन रूलर्स. अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट जो है इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल. वो एक रूल का जो है बाय विच कंट्री इज़ गवर्नड. एक हुक्मरानी करने का, एक रूल करने का एक निज़ाम है जिससे आपकी जो हुकूमत, मुल्क की जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, वो चलती है. तो पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान इज़ अ फेडरली पार्लियामेंटरी republic and thus the federal government manages the state at the national level. पाकिस्तान जो है वो एक पार्लियामेंटरी रिपब्लिक जो है मुल्क है जिसके अंदर मतलब जो है सूबे हैं और एक मरकज़ी हुकूमत है. इसीलिए उसका जो है जो फेडरल मरकज़ी हुकूमत जो है, वफाकी गवर्नमेंट जो है, वो बाकी जो स्टेट के यानी कि रियासत की जो कंट्री के जो सूबे हैं उनको जो है वो रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, चलाता है. The system it follows is based on democratic principles. और जहाँ तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो बुनियादी वो जो है वो जमहूरी उसूलों पर जो है वो डिपेंड करती है, बेस करती है. अच्छा, The state comprises of 3 institutions that functions as the government. जो रियासत है वो 3 इंस्टीट्यूशन, इदारों पर जो है वो बेस्ड करती है. The executive power is exercised by the government. और जो एग्जीक्यूटिव पावर जो हैं, जिसके अंदर इंतज़ामिया की पावर आ जाती हैं, ठीक है, वो हुकूमत चलाता है. जबकि जो लेजिस्लेटिव पावर इज़ वेस्टेड इन दी पार्लियामेंट. जो कानून साज़ी, कानून बनते हैं, कानून जुड़ते हैं, कानूनों के अंदर तरमीम होती है, तब्दीलियात होती हैं, रिफॉर्म्स आते हैं, वो सारे पार्लियामेंट जो है के अंदर होती हैं. तो पार्लियामेंट क्या होता है, वो एक नेशनल असेंबली होती है जिसके अंदर आपके सारे जो है वो जो आपकी असेंबली जो होती है वो एक नेशनल असेंबली होती है, यानी कि मुल्क का वफाकी असेंबली होती है जिसके अंदर MNAs बैठते हैं. और दूसरी होती है provisional assembly in which the provisional representative sit in to make the laws for the province. ठीक है, तो hold office for a term of 5 years. तो वो जो है यानी कि 5 साल के लिए ऑफिस, वो जो पार्लियामेंट की जो ऑफिस होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनली 5 साल का मुद्दा होता है उसका. द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू बी इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली. जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नेशनल असेंबली से जो है वो मुंतखब होते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट. जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गवर्नमेंट के हेड हैं, सरबराह हैं. वेयर इज़ द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट. जबकि जो प्रेसिडेंट है वो रियासत का जो है
وہ ہیڈ ہے، یعنی کہ ریاست کے اندر جو بھی ایک سرمونیل جو رسمی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انتظامیہوں کے اندر بندوں کو منتخب کرنا، ان سے وہ اوتھ لیتے ہیں. دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آلسو personifies the fundamental rights and duties of the cities and reflects the aims and aspirations of the people of the country. پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی ملک کی دفاع کے لیے لوگوں کے، شہریوں کو اور جو پاکستانی معاشرہ ہے ان کے حقوق ہیں، ان کے بنیادی حقوق کی جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ظاہر کرتی ہے، اور اس کو جو ہے اس کے اوپر مطلب کو چلانے کے لیے بنی ہوئی ہے. اٹ انکلیوڈز دی prohibition of slavery and forced labor, freedom movements, freedom of speech and freedom to the profess religion among the other things. تو اس کے اندر ساری گنجائشیں رکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ لوگوں کو آزادی، مذہب کے بنیاد پر آزادی ہے، لوگوں کو یعنی کہ سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر لوگوں کی جو لیبر ہے، جابس کے اندر فریڈم ہے، مطلب مختلف جو فریڈم، مختلف قسموں کی جو آزادی ہے، فریڈم ہے، وہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اٹ گیوز ٹو اٹس people that its people should enjoy such kind of facilitations. The present Constitution of Pakistan was drafted in 1973 during the regime of فارمر پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو. اس وقت پاکستان کے اندر جو آئین نافذ العمل ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے 1973 میں حکومت تھی، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے بنی تھی. اٹ واز ڈرافٹیڈ بائی اے 25 ممبر کمیٹی اپوائنٹڈ بائی نیشنل اسمبلی ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت جو قومی اسمبلی ہے اس کے نگرانی میں، اس کے 25 ممبر کی نگرانی میں یہ آئین جو ہے تشکیل کی گئی تھی. ٹھیک ہے، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ جو ہے جو اپنے چیپٹر نمبر جو آپ کا 6 ہے اس کے جو کوسچن آنسرس ہیں وہ 3 کوسچن اس کے آنسرز جو ہیں وہ یاد کر دیں اور پھر ان کو اپنے وائس کے تھرو مجھے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کرنا. اوکے، وش یو بیسٹ آف لک.